in the last class. Let us just revise the linguistic principles. The first one was language is a learned activity. Language is a system. Language is a system of systems. These are all the subsystems. Language is a system of symbols. The symbols of the language are vocal. The symbols of the language are arbitrary. So we had discussed all these linguistic principles. Next is language is human. You can write your own explanation for this, that language is spoken by the human beings to communicate with each other. So language is human. Language is non-instinctive. We have discussed this, that it is not inborn. Every human being has to learn language. So language should be practiced because it can be developed with the habit formation. Okay, so in this point you can write or explain in this way. Language is for communication. This point also you can write that the human beings can communicate their ideas, emotions, their feelings with the help of language. Language is meant for communication. Next linguistic principle is language is made up of habits. Okay, we have already discussed that language can be developed with practice and imitation. So it is made up of a set of habits. Language grows out of culture. Every language is the product of a particular society and culture. So language grows with a culture. Next linguistic principle is language grows and changes. Language grows and changes. You can write that new words are added in the language. Okay. With the scientific and technological developments, more words are added, and language is not static, it is dynamic, it keeps on changing along with the culture and along with the modern times. Language is unique, every language is unique. It has its own sentence structure, words, symbols, sounds. So these were the linguistic principles. Now, whenever there is a question that write down the linguistic principles of teaching and learning English language, you have to write all these linguistic principles, and you also have to write the implications for teaching English. Whether it is asked in the questions or a question or it is not asked, you have to write the implications. If you will not write the implications, then your marks will be deducted. Okay, so along with the principles, linguistic principles, you also have to write the implications for teaching language. Implications का मतलब क्या है कि जो भी हमने अभी linguistic principles किए हैं, उससे teachers को क्या फायदा होता है या teachers कैसे work करें so that learning better हो पाए students की. They can learn language well. इन principles से क्या फायदा हो रहा है टीचर्स को और कौन से मेथड से वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं. ओके, व्हाट आर द टीचर्स लर्निंग और हाउ दीज linguistic principles are benefiting the teachers, how they should change their method or the way of teaching after learning these linguistic principles.
So let us see what these principles imply to the teachers, the implications for teaching English. Okay, आपने अपने आंसर में ये लिखना है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने के बाद, चाहे आपको पूछे हो इम्प्लीकेशंस या ना पूछे हो, फिर भी अपने आंसर में जब आपको लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन आता है, यू हैव टू राइट आल्सो द implications for teaching English. Every language is learnable. ठीक है, हमने पहले कौन सा किया था लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, दैट ये भी किया है दैट लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव, है ना, तो उसको लर्न करना पड़ता है। इसी से पता चल जाता है कि टीचर को लर्न करवानी पड़ेगी लैंग्वेज बच्चों को। ठीक है, सो एवरी लैंग्वेज इज लर्नेबल, ऑल कैन लर्न द लैंग्वेज। टीच इंग्लिश सिस्टमैटिकली, क्योंकि लैंग्वेज इज अ सिस्टम एंड लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, इसीलिए लैंग्वेज को सिस्टमैटिकली पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, टीच इंग्लिश सिस्टमैटिकली। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो है लैंग्वेज इज अ सिस्टम या फिर लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, वही से हमें ये इम्प्लाई होता है या इम्प्लीकेशन मिली है कि टीच इंग्लिश सिस्टमैटिकली और स्टेप बाय स्टेप इन प्रॉपर सीक्वेंस। The system of English language comprises of 44 basic units of sound and 275 structures. ठीक है, तो implication next क्या है, teach English systematically. Use oral way. Oral है कि आप बोल बोल के पढ़ा रहे हो स्पीच के तरीके से, oral है related to your ears, सुन के। ठीक है, आप सुना रहे हो, मीन्स यहाँ पे स्पीकिंग एंड लिसनिंग की बात हो रही है कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स को टीचर को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। टीचिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज शुड बी डन इन द क्लास। यूज ऑफ ओरल वे। ठीक है, बिकॉज लैंग्वेज कैन बी लर्न बाय स्पीकिंग एंड बाय लिसनिंग। टीच इंग्लिश एज कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कम्युनिकेट करके या एक्सप्रेस करके अपने आप को इन योर डेली लाइफ व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, फिर ही वो फ्लुएंसी आ सकती है। सो टीच इंग्लिश एज कम्युनिकेशन। यू शुड टॉक टू ईच अदर इन इंग्लिश सो दैट यू आर मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज व्हिच यू आर लर्निंग। सो टीच इंग्लिश एज कम्युनिकेशन। इंटीग्रेट लैंग्वेज एंड कल्चर। लैंग्वेज एंड कल्चर को इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए। लैंग्वेज एलिमेंट्स एंड द कल्चरल थीम्स शुड बी इंटीग्रेटेड। जैसे आपको आप स्टूडेंट्स को दे सकते हो essay on Diwali. So when the students are writing an essay on Diwali, then they are finding out or they are exploring their culture कि हिंदू कल्चर में दिवाली कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, ये सारी चीजें बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे, फिर वो अपने एसे में लिखेंगे। सो दे आर ऑल्सो डेवलपिंग their culture, learning something about their culture, and also they are integrating it with the language. कोई स्टोरीज हैं वो भी मॉरल उसमें थीम होनी चाहिए, कल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए, इंडियन कल्चर डिपिक्ट करनी चाहिए, है ना, सो दैट the culture can be developed along with the language. Integrate languages and culture, क्योंकि हमारा linguistic principle कौन सा है, that language grows with the culture and language also grows and changes. So वहाँ से implication मिली है that integrates the language and culture. Next देखो, teach English as habit. ठीक है, ये तो आपको पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। यू हैव अंडरस्टूड दिस दैट लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव एंड लैंग्वेज कैन बी डेवलप्ड बाय हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, सो टीच इंग्लिश एज हैबिट। ऑर्गेनाइज द लैंग्वेज मटेरियल। टीचर को लैंग्वेज मटेरियल ऑर्गेनाइज करके पढ़ाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना चाहिए। जैसे आप पहले नाउन पढ़ाओगे, फिर वर्ब पढ़ाओगे, फिर एडवर्ब पढ़ा सकते हो या एडजेक्टिव पढ़ा सकते हो, है ना। फर्स्ट क्लास में तो आप एडजेक्टिव नहीं पढ़ा सकते हो,
तो सिस्टमैटिकली यू हैव टू टीच नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, है ना, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब. द टीचर मस्ट केयरफुली सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द कोर्स कंटेंट, मतलब जो भी सिलेबस है, एंड द मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उस तरीके से पढ़ाना चाहिए जैसे इजी टू डिफिकल्ट. टीच करंट यूसेज ऑफ लैंग्वेज, English language. Do not lean heavily on the mother tongue. When the teacher is teaching English language, then the teacher should speak in English. She should not speak in the mother tongue. कोई कोई वर्ड समझा सकती है टीचर मदर टंग में, मगर शी शुड नॉट लीन हेवीली, मतलब हमेशा मदर टंग में नहीं बोलना है टीचर ने. शी हैज टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, और बच्चों को भी बोलना है दैट दे शुड स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज. foster the desire to learn the language, and interest create करना है students के अंदर कि वो language learn कर सकें, उसको interesting तरीके से पढ़ाना है. So foster the desire to learn the language. So these were the implications of teaching English after you have studied the linguistic principles.